guys, welcome back to my channel. I'm Ritika. So today I have created this very pretty Indian makeup look. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस लुक को बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं किसी भी इंडियन पार्टी या किसी भी इंडियन फंक्शन में. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So I'm just going to moisturize my skin with the help of my Nivea cream. So I'm just going to apply it all over my face and then इसकी मदद से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी. I'm just going to apply my Neutrogena Ultra Sheet Dry Touch Sunblock Sunscreen with SPF 50 PA+++ because sunscreen बहुत ज़रूरी होती है समर्स में. So make sure कि आप अपने फेस पे सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें. इसको मैं अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी एंड देन पूरे फेस पे स्प्रेड कर दूँगी. Okay, so first we're going to do our eye makeup and for that I'm going to apply my ADS concealer. इसको मैं अपनी आईज के आईलिड पे अप्लाई करूँगी एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से स्प्रेड एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी. After that, I'm just going to take this loose powder with the help of this brush. I'm just going to set my face with, basically set my eyes with the help of this Lakme loose powder. Then after that, I'm just going to pick this red shade with the help of this eyeshadow brush and apply it all over my eyelid. After that, I'm just going to pick this brown shade and apply it on the outer V of my eyes. इसको बस मैं अपनी eyes के outer V पे apply करूँगी. With the help of this flat brush, I'm just going to pick this shade. मैं इस flat brush की वजह से इस shade को pick करूँगी and अपनी eyes की eyelid area पे apply करूँगी. After that, I'm just going to apply kajal. I'm going to blend it with the, going to just smudge it with the help of this flat brush. मैं kajal apply करूँगी पहले अपनी eyes पे. सेम काजल को मैं अपनी आईज के आईलिड पे भी अप्लाई करूंगी फॉर अ स्मोकी इफेक्ट. Then with the help of this palette, I'm just going to pick this shade with the help of this angled brush. I'm going to do my eyebrows. इस palette की मदद से मैं अपनी eyebrows फिलिंग करूंगी. My face, what I'm going to do is I'm going to apply my Lakme Absolute Blur Perfect Makeup Primer. इसको मैं बहुत कम अपनी फिंगर पे इस तरीके से लूँगी. इसकी इतनी सी क्वांटिटी इनफ होती है. सो इसको मैं अपने टी जोन पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी एंड देन जस्ट गोइंग टू स्प्रेड इट विद इसको मैं अपने पूरे फेस पे इस तरीके से स्प्रेड कर लूँगी. एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई माई Maybelline Fit Me फाउंडेशन. इसकी बस मैं इतनी सी क्वांटिटी अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी डॉटेड फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन इसको एक ब्रश की मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी. मेक श्योर कि आप अपने नेक पे भी अप्लाई करें ढंग से.
Apply my ADS concealer under my eyelid. Okay, so just going to apply my ADS concealer under my eyes so that कि मेरी eyes के नीचे जो dark circles हैं वो थोड़ा hide हो जाए. So then I'm just going to use this brush and just going to apply a little bit of compact all over my face just to set my base. अपने बेस को सेट करने के लिए मैं बहुत कम क्वांटिटी में, लिटरली बहुत कम क्वांटिटी में लूज पाउडर लूँगी. I'm just going to pinch this brush and apply my bronzer with the help of my Swiss Beauty Big Blusher and Highlighter palette. Just going to apply blusher with the help of this palette. After that, I'm just going to highlight my face with the help of my In Color Highlighter palette. I'm just going to apply this L18 lipstick on my lips. I'm just going to apply my Lakme Absolute Plump and Shine Lip Gloss. ओके सो डेट्स ऑल फॉर दिस लुक. आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो. और अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, मगर इस चैनल पे और भी कई सारी वीडियोस हैं तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें. टिल देन बाय.